Good morning, children. Welcome back in your English class. Children, I hope that you have watched the video and I hope that you all are very fit, very fine, very happy, and also I hope that you are watching video. Children, as you know that we have started the chapter Albert Einstein at school from your snapshots section, that is a chapter number 4. Children, we have done some explanation in previous lecture. So in today's lecture also we will continue this chapter and we'll do the explanation. So let's start the chapter. Now, children, in this lecture we will continue the lecture. We will continue the explanation of this chapter, and the next para is of this chapter. The next para is going back to his lodgings did not cheer him up. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. He did not mind the bad food and lack of comfort, or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. His landlady beat her children regularly, and every Saturday her husband came drunk and beat her. Now, children, here in this paragraph, for Einstein, school was surely an unpleasant place for him, but his place for stay in Munich was nothing better. Why? Because of limited cash availability with his father, and he had to stay within the poorest neighborhood in Munich. However, poverty, bad food, dirt, and lack of comfort hardly bothered him. It was the frequent fights at the place that he hated. Even the landlady's family was a violent one, where she used to hit her kids every now and then, while her husband beat her every Saturday after he came back home drunk. So, for him, for Albert, Munich was nothing better. And of course, it was surely that school was an unpleasant place for Albert. कहने का मतलब ये है कि स्कूल जो है एल्बर्ट के लिए एक दुखदाई जिसे कहते हैं वो प्लेस था श्योरली, लेकिन म्यूनिक भी उसके लिए बहुत अच्छी जगह नहीं थी, क्योंकि एक तो उसके फादर के उनके एल्बर्ट के फादर के पास बहुत लिमिटेड कैश था, और उन्हें मतलब एक ऐसे नेबरहुड के पास रहना पड़ रहा था जो एल्बर्ट को बिल्कुल ही पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ पे पावर्टी और खाना और गंदगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सुख सुविधाएँ चीज़ें, कंफर्ट की चीज़ें नहीं थी वहाँ पे। लेकिन इसका भी एल्बर्ट को कोई बॉदर नहीं था कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, कोई बात नहीं, फिर भी चल जाती है, सब चीज़ें भी एडजस्ट हो जाती है एल्बर्ट से। पर जो वहाँ का इन्वायरमेंट था नेबरहुड का, वो बहुत ही वायलेंट था और बहुत ही डिस्ग्रेसफुल था फॉर एल्बर्ट, क्योंकि वो बहुत ही उस जगह से, इसलिए उस जगह से वो बहुत ही हेट या नफरत करते थे एल्बर्ट, क्योंकि वहाँ पे ये था कि वहाँ की जो जो नेबरहुड की जो फैमिली थी वो बहुत ही वायलेंट थी, क्योंकि वो जो मदर थी, वो जो लेडी थी, लैंड लेडी, वो अपने बच्चों को हमेशा मारा करती थी, बहुत ज़्यादा उन लोगों को बीट करती थी। और उसके हस्बैंड जो है एवरी सैटरडे ही केम बैक और बिल्कुल ड्रंक करके आते थे, और फिर वो अपनी वाइफ को भी जो है वो वायलेंटली बीट करते थे। तो इसीलिए एल्बर्ट उस नेबरहुड को पसंद नहीं करते थे। That is why both school and his neighborhood, he hated both the places. Now, children, in next paragraph, but at least you have a room for your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. At least you live among civilized human beings, even they are all poor students, said Albert. They are not all civilized. Yuri replied, did you not hear that one of them was killed last week in a duel? And what happens to the one who killed him? Nothing, of course. He is even proud of it. His only worry is that authorities have told him not to fight any more duels. He is upset about this because he has not single scar on his face to wear on the rest of his life as a badge of honor. Oh, exclaimed Albert, and these are the students. Well, you will be student one day, said Yuri. I doubt it, said Albert glumly. So, in this paragraph, children, we are introduced to his friend Yuri, who is also not very fortunate,
and Yuri was his best friend. Yeah, you can say that Yuri was only his friend, with whom Albert shared all his secrets, all his conversation, all his details of life with Yuri. Now, so Yuri, who is also not very fortunate, and he reminds Albert that he should be glad about the fact that he has a room for his own to live, even though the neighborhood is not something he likes. Then, children, in return, Albert reminds Yuri that even though Yuri lives among poor students, they are all civilized and non violent. Then Yuri interrupts to correct him that not all of them have manners, and only last week one was killed in a fight. The one who killed him did not face any circumstances except never being allowed to play a duel again. Then the only regret that guy had was that he won't be able to show off a scar as a symbol of bravery. Then Albert sighs at the state of students pursuing diplomas. Yuri then gives Albert some hope by saying that he will be a student too, to which Albert expresses his doubtfulness. मतलब कहने का बच्चों ये है, इसके कहने का मतलब ये है कि जब हुआ कि शाम को जब यूरी से एल्बर्ट मिलने गए, और यूरी वो दोस्त है जो कि उनका इकलौता दोस्त था जिससे वो हर चीज़ें वो शेयर करते थे, तो उन्होंने कहा कम से कम तुम्हारे पास अपना कमरा तो है, जो और मेरे पास तो, मैं तो इतना अनफॉर्चुनेट हूँ। तो यूरी ने कहा कि मैं तो इतना अनफॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पास तो वो भी कमरा नहीं है। एल्बर्ट ने कहा कम से कम तुम सिविलाइज्ड लोगों के बीच में तो रहते हो, भले वो पुअर स्टूडेंट्स हों या पुअर प्यूपल्स हों। तो यूरी ने रिप्लाई किया लेकिन वे सिविलाइज नहीं है। और उसने यूरी ने एक इंसिडेंट के बारे में बताया एल्बर्ट को, जो कि ये शो कर रहा था कि वो सिविलाइज लोग के बीच पे वो भी नहीं रह रहा है। यूरी ने कहा क्या तुमने नहीं सुना कि उनमें से एक जो स्टूडेंट था वो लड़ाई में उसकी डेथ हो गई, वो मारा गया। तो और जिसने उसका मर्डर किया उसका क्या हुआ? तो रियलिटी में कुछ भी नहीं हुआ। और जो जिसने उसे मारा उस बात पे वो बहुत ही प्राउड फील कर रहा है। उसे केवल इस बात की चिंता है कि जो ऑफिसर्स थे उसको आगे से जो है वो लड़ाई करने के लिए उन्होंने उसको मना कर दिया। तो वह इस बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है, या वो बहुत ज़्यादा वरी है, क्योंकि उसके चेहरे पे एक भी स्कार का निशान नहीं है, और वो बहुत ही ज़्यादा ऑनरेबल या सम्मान के पदक के रूप में, जैसे उसको कोई बहुत रिस्पेक्ट दिया गया हो और वो अपनी लाइफ को रिस्पेक्टिवली जी रहा है। तो क्या ये सिविलाइज्ड है? तो ये सिविलाइजेशन तो नहीं है, ये सिविलाइज्ड पर्सन के तो सिंबल नहीं है। तब एल्बर्ट ने कहा ओह तो और ये स्टूडेंट्स हैं। एल्बर्ट बहुत ही सरप्राइजली, बहुत अमेजिंग, बहुत ही सरप्राइज होके पूछते हैं कि और ये क्या स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं? फिर यूरी ने रिप्लाई किया ठीक है, तुम भी एक दिन विद्यार्थी तो होगे ही ना। लेकिन एल्बर्ट ने यहाँ बिल्कुल ही बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गए और कहा, फिर एल्बर्ट बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो डाउट है इस बात पे। सो लास्ट में एल्बर्ट कहते हैं नो, दैट इज़ वाई एल्बर्ट से हियर द ऑथर इज सेइंग दैट, कि एल्बर्ट कहते हैं नो आई डाउटेड, सेड एल्बर्ट ग्लम्बली मीन्स आप यहाँ कह सकते हो कि डिजेक्टली, यानी निराशा से, विद डिसअपॉइंटमेंट। तो ग्लम्बली मीन्स डिसअपॉइंटमेंट। तो एल्बर्ट बहुत ही डिसअपॉइंट होकर बोलते हैं कि नहीं, मुझे डाउट है कि ये स्टूडेंट है भी या नहीं। Now in next paragraph, I doubt it, said Albert glumly. I don't think I will ever pass the exams for the school diploma. He told his cousin Elsa next time she came to Munich. Normally she lived in Berlin, where her father had a business. I'm sure you could learn enough to pass the exams, Albert, if you tried, she said. I know lots of boys who are much more stupid than you are, who get through. They say you don't have to know anything. You don't have to understand what you are taught. Just be able to repeat it in the exams. That's the whole trouble, said Albert. I'm no good at learning things by heart. You don't need to be good at it. Anyone can learn like a parrot. You just don't try. And yet I always see you with a book under your arms, added Elsa. What is the one you are reading? Now, when Yuri told about those person,
among whom the Yuri lived, then that those were the students. Then Albert was very became very disappointed, and he expresses his doubtfulness. Then Albert expresses his concern to his cousin Elsa. Elsa was his cousin sister. His by cousins Elsa saying that it is not very likely for him to pass exams. And Elsa, who had come to visit Albert in Munich, and she normally lived in Berlin, and then the Berlin, the place for her family business. Then Elsa tried to convince Albert to learn just enough to pass the exam. So here the Elsa tried to convince Albert to learn just enough to pass the exam by learning and repeating facts, and that she had been that and that she had seen a lot of dull guys do it. Then Albert again, on hearing this conversation, this statement of Elsa, Albert again exclaimed that learning things by heart is not just his best thing. And then he says that then Elsa represented her counter agreement that anyone can learn like a parrot, but for that one needs to try, which Albert does not. She then expresses irony by mentioning that he always has a book under his arm. देन ही देन शी यहाँ पे क्या होता है कि जो एल्सा होती है, जो उसकी कज़न सिस्टर है, उसका इंट्रोडक्शन है इस पैराग्राफ में. और एल्बर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा वो कहते हैं, अल्बर्ट कहते हैं कि मुझे डाउट है कि मैं नहीं सोचता कि मैं कभी स्कूल डिप्लोमा की परीक्षा जो है वो पास कर पाऊँगा या नहीं. और इससे पहले वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे ये सुनकर कि स्टूडेंट्स भी लड़ाई करते हैं. फिर उसने यही बात जो है अपनी कज़न बहन एल्सा से भी कही कि जब वो अगली बार म्यूनिक आई, और जनरली जो एल्सा है वो बर्लिन में रहती थी जहाँ पे उसके फादर का बिजनेस था. एल्सा ने कहा, एल्बर्ट तुम अगर तुम कोशिश करो तो तुम एग्ज़ाम पास कर सकते हो, और मुझे बिल्कुल आई बिलीव आई हैव कहती एंड शी वो कहती कि शी बिलीव्स इन हिम कि तुम काफ़ी कुछ सीख सकते हो, और आई एम श्योर कि वो काफ़ी कुछ सीख सकते हो, एल्बर्ट सीख सकता है. और फिर वो कहती कि मैं बहुत से ऐसे बॉयज़ को जानती हूँ, एक गाइस को जानती हूँ जो बहुत ज़्यादा बुद्धू हैं या बहुत ज़्यादा फुलिश हैं, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल हो गए हैं. और उनका मानना है कि किसी भी चीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाए गए जो स्टडी करते हैं या लर्निंग जो सब्जेक्ट को उसको समझने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. ज़रूरत क्या है, उनको केवल एग्ज़ाम के लिए जो है वो दोहराकर या लर्न करने की है. फिर एल्बर्ट ने जब ये कॉन्वर्सेशन ये स्टेटमेंट सुना एल्सा का, तब उसने कहा परेशानी तो यही है, प्रॉब्लम तो यही है कि मैं रट कर या लर्न करके कोई चीज़ नहीं कर सकता. फिर एल्सा ने कहा तुम्हें रटने में अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है, तोते की तरह कोई भी सीख सकता है, तुम केवल कोशिश करो, ट्राई करो, यानी तुम केवल कोशिश नहीं करते. और फिर भी मैं तुम्हें हमेशा बगल में मैं तुम्हें मैं और एक आर्टिकल वे में वो कमेंट पास करती है एल्बर्ट को कि मैंने तो हमेशा तुम्हारे बगल में एक बुक देखी. वो क्या पुस्तक, वो कौन सी बुक है जिसको तुम पढ़ रहे हो? तुम कहते हो मैं लर्न नहीं करता हूँ, तो फिर ये क्या चीज़ है, ये क्यों पढ़ रहे हो? नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज अ बुक ऑन जियोलॉजी. Geology, rocks and things. Do you learn that? No, we have hardly any science at school. Then why are you studying it? Because I like it. Isn't that a good enough reason? Elsa sighed. You're right, of course, Albert, she said, but it won't help you with your diploma. Apart from books on science, his only comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. That wailing gets on my nerves, she said. There's enough noise in this house with all kids howling. Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. I must get away from here, he told Yuri, after 6 months alone in Munich. It is absurd that I should go on like this. In this end, it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. It will be better for all if I stop now. Now, in this paragraph, Albert replies, then he tells her, Elsa, that it is a book of geology which is not taught in school.
Then he adds that they are hardly taught science at school. Then Elsa does not understand why he is reading the book if it is not a part of his curriculum. Then Albert clarifies that he likes studying science and considered it a good reason, good enough to read it. Then Elsa understands this, but also warns him that if that it is not going to help him in passing his diploma. Then Albert was very fond of reading science books, and the only things that brought him joy and peace was music. He played the violin a lot, but only until his landlady told him to stop. The sound supposedly irritated her, and she justified by saying that kids already make a lot of noise in the house. Then Albert wanted to say that she is the one who made her kids cry all the time, but somehow resisted the urge to say it, probably for the better. Then what happened? After being in Munich alone for 6 months, Albert expressed to Yuri that he feels it's high time he moves away from here. He sees no point in carrying on like this because if he does, it is only going to result in wastage of his father's money and everyone's time and efforts. Then Yuri asks if he has any backup plans, to which Albert says that um, going to Milan would be such a great idea because his father would send him back. Then yeah, now here the says that the author says that the Albert replies that it is only that it is only going to result in wastage of his father money and everyone time and efforts. कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पर जो जब एल्सा कहती है कि तुम हमेशा एक बुक पढ़ते रहते हो, वो कौन सी बुक है, तो क्या पढ़ते रहते हो, तब एल्बर्ट कहता है वो जियोलॉजी की बुक है, और जियोलॉजी साइंस का एक पार्ट है और रॉक्स और ऐसी चीज़ों के बारे में क्या तुम इसको पढ़ते हो? एल्सा नहीं, हमें केवल स्कूल में विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है। एल्बर्ट रिप्लाइज कि मुझे स्कूल में विज्ञान नहीं पढ़ाया, साइंस नहीं पढ़ाया जाता है। फिर एल्सा कहती है फिर तुम इसको क्यों पढ़ रहे हो? तो एल्बर्ट कहता है क्योंकि मुझे पसंद है और ये रीज़न काफ़ी है पढ़ने के लिए। तो एल्सा ने बहुत ही अफसोस से कहा ओ आई सी। फिर एल्सा ने कहा कि एल्बर्ट रियल में तुम ठीक हो, पर ये तुम्हारी डिप्लोमा में ये रियल में तुम ठीक हो कि यू लाइक साइंस, लेकिन ये डिप्लोमा में तुम्हारी मदद नहीं करेगी ये बुक। जो साइंस की बुक्स के अलावा जो है म्यूज़िक जो है उसके लिए एक रिलैक्सेशन का सोर्स था, और वो हमेशा वायलिन ही एल्बर्ट बजाता था जब तक कि उसके जो मकान मालिक थे उसे मना नहीं कर देती थी। तो उसकी जो मकान एल्बर्ट बताता है यहाँ पर कि उसके जो मकान मालिक कहती थी कि वो जो है वो उसकी जो म्यूज़िक है वो उसके दिमाग को या उसके बहुत ही पेनफुल है और बहुत ही ज़्यादा शोर होता है और सभी बच्चे बहुत शोर करते रहते हैं। तो एल्बर्ट जो है वो कहता था कि वायलिन से बहुत परेशानी होती थी हमारी जो लैंड लेडी थी, लेकिन वो हमेशा अपने बच्चों को मारा भी करती थी और वो बच्चे उसके बहुत ज़्यादा शाउट भी करते थे। फिर एल्बर्ट ने कहा कि लेकिन कुछ भी कहना इस बारे में ठीक नहीं है टू द लैंड लेडी। फिर एल्बर्ट ने यूरी से कहा मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे म्यूनिक में अकेले रहते हुए 6 मंथ हो गए और यहाँ बेकार है रहना, और मैं जिस तरह से यहाँ रह रहा हूँ बिल्कुल मेरे लिए यूज़लेस है। और लास्ट में यही रिज़ल्ट निकलेगा कि मैंने अपने फादर का सारा जो पैसा है मनी है वो मैंने बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया, और मैंने टाइम भी वेस्ट कर दिया। तो सबके लिए यही अच्छा होगा कि मैं ये सब करने से अब रुक जाऊं या अब यहाँ से मैं चला जाऊं। It would be good for him to leave the place Munich. So we will stop here, children, and in the next lecture we will continue this chapter, and we will continue and we will continue the explanation. So take care of yourself and please watch the video. So goodbye.